Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. आज का जो क्लास है बेसिकली इस क्लास में हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का थ्री डायमेंशनल केस डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग पिछले वाला लेक्चर में पिछले जो जितना सारा लेक्चर था हर एक लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का फर्स्ट काइंड वन डायमेंशन केस हम लोग डिस्कशंस किया, ठीक है। उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी किए थे जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस से रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा था, इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह हम लोग किए बेसिकली, ठीक है। सो इन दिस क्लास, today's class, we are basically discuss the three-dimensional Dirac delta functions. To discuss the three-dimensional Dirac delta functions, we take a general formula or general table. Three-dimensional Dirac delta functions को स्टडी करने से पहले ठीक है, इस थ्री डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को स्टडी करने से पहले 3D डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस इसको हम लोग चेक बेसिकली आज का क्लास में डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट डेल्टा functions in three-dimensional case. It is a functions, okay, three-dimensional direct delta functions, as it is a functions and it is defined in three-dimension case is delta cube of r vector. It is delta cube of r vector and it is equals to basically 0 and infinity. 0 when r vector is greater than 0 and infinity when r vector is equals to 0, where r vector is nothing but a positions vector, that is x I cap plus y j cap plus z k cap. ठीक है, this is the definitions of three-dimensional Dirac delta functions. So this three-dimensional Dirac delta functions is 0 everywhere except the origins. Okay, that means this 3D Dirac delta functions, Dirac delta functions is three-dimensional Dirac delta functions is 0 everywhere, right? Is 0 everywhere except origins, that means 0, 0, 0. This is the origins. origin में basically इसका वैल्यू मैक्सिमम आने वाला है, basically मैक्सिमम मिल रहा है ना। So this is the basic representations of Dirac delta functions. अब इस टाइप का Dirac delta functions का हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन बेसिकली चेक करने वाले हैं, ठीक है। ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, इसको हम लोग ऑल स्पेस के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी इस रीजन में जो वॉल्यूम है इसका ओवरऑल स्पेस के लिए हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम लोग चेक करने वाले हैं इस थ्री डायमेंशनल डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को। हम लोग बेसिक को स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली वॉल्यूम इंटीग्रेशन। हेडिंग डालिए वॉल्यूम इंटीग्रेशन, राइट, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। Volume integral of this Dirac delta functions, right? So volume integrations, it is integrations all space, ठीक है। That space volume is basically enclosed. जो volume है ना इस overall space को basically enclose किया, ठीक है। इसके बेस में हम लोग इसका volume integration delta cube of r vector into dv हम लोग फाइंड करने वाले हैं। So this is nothing but it is equals to basically all space delta cube r
it's equals to delta x delta y delta z dx dy dz, and it is equals to basically minus infinity to plus infinity delta x dx into minus infinity to plus infinity delta y dy equals to minus infinity to plus infinity delta z into dz, so it is equals to basically 1. So the volume integrations, it is equals to 1. Okay, so the volume integrations delta cube all space के रेस्पेक्ट में delta cube r vector into d3r, it's equals to 1. Please remember, this is the volume integrations. Now find out the another properties, another case. What is this value of this case? Let us consider all space f of r vector delta cube r minus a vector. A vector is any point, right? A vector is any point vector. This is equals to delta cube r. It is equals to what? So it is equals to basically 0. It is basically equals to 0 when volume is does not enclose within the volume does not enclose the overall space, all space. जो overall space यहाँ पे defined होगा ना, given होगा, उस volume उस space के अंदर basically है कि नहीं वो चेक करना होगा. ठीक है, एक वॉल्यूम है, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम 3 डायमेंशन केस का मतलब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल बेसिकली चेक कर रहे हैं ना. ये वॉल्यूम इज enclose the overall space or not. If volume does not enclose the overall space, then the given integration is 0. But the volume is enclose the overall all space, then the given integration is have a value. 0 कब मिलने वाला है बेसिकली? If volume does not enclosed all space. Okay, enclose all space. अब 0 होने वाला है. But if volume is enclosed the all space, overall space, then its value it's equals to f of a vector. Okay, f of a vector. So all space के respect में इसका value basically इस तरह आने वाला है. That is important. Please note down. These two are the basic properties of Dirac delta functions, basic definitions of Dirac delta functions. Now we are find out the three-dimensional Dirac delta functions in different coordinate system. So take a heading: Dirac delta functions, three-dimensional Dirac delta functions, 3D Dirac delta function, 3D Dirac delta functions, 3D Dirac delta functions in different coordinate system. ठीक है, different coordinate system. Okay, check करने वाले हैं different coordinate system. 3D Dirac delta functions in different coordinate system. So first of all, इसको चेक करने के लिए हम लोग एक जनरल टेबल को हम लोग याद करने वाले, नोट करके एक जनरल टेबल. पिछले क्लास में हम लोग इस टेबल के बारे में डिस्कशंस किया, हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे इसको और लेक्चर को आगे लेके जाने वाले. तो जनरल एक टेबल लेने वाले हम लोग. टेबल इज नथिंग बट एक कैसे हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कैसे
कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करते हैं, एज वेल एज सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, हाउ टू कन्वर्ट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. So basically we take a system. These are the U, V and W, and that are the curvilinear coordinate system H1, H2 and H3. Okay, so if we consider the Cartesian coordinate system, if we consider the Cartesian coordinate system in X, Y, Z, and that place curvilinear coordinate system are 1 or 1. That's fine. Second is the spherical polar coordinate system is R, theta, phi. It is equals to 1 R sine theta. And also in cylindrical polar coordinate system, it is S, phi, Z, and it is equals to 1 S 1. This is a general table. इस टेबल को थोड़ा सा आप याद रखिए, ठीक है. हम लोग कैसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम H1, H2 और H3 आर कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट बेसिकली, ठीक है. सो यूजिंग द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले. देन वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, spherical polar coordinate system, as well as in the cylindrical polar coordinate system of the given Dirac delta functions. Okay, so general formula of Dirac delta functions, general formula of Dirac delta functions in 3 dimension. Okay, general formula of Dirac delta functions in 3 dimensions, that is equals to delta cube r vector minus r naught vector. This is any kind of point r naught vector. It's r naught vector. यहाँ पे basically r vector is nothing but x I cap plus y j cap z k cap, and r naught vector is basically x naught I cap plus y naught j cap plus z naught k cap. This is the any point. So r naught is a any point x naught, y naught and z naught. This is the any point. Okay, that's fine. That's fine. This is the one point. So the definitions of three-dimensional Dirac delta functions. Three-dimensional Dirac delta functions, it's 1 upon H1, H2, H3 into delta x minus ओके, हम लोग जनरल फॉर्मूला लेने वाले हैं r माइनस स्फेरिकल पोलर. ओके, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लेते हैं हम लोग इसको. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बेसिकली इसको डिस्कस करने वाले. सो ओके, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली x माइनस x नॉट इनटू डेल्टा y माइनस y नॉट इनटू डेल्टा z माइनस z नॉट. अब देखिए H1 इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 इज नथिंग बट 1 1, H2 is 1, H3 also 1. So 1 into 1 delta x minus x naught delta y minus y naught delta z minus z naught. So it is equals to basically delta x minus x naught delta y minus y naught delta z minus z naught. So this is the Dirac delta functions expressions in Cartesian coordinate system. So we get this is the Cartesian form. This is the Cartesian coordinate system form. Cartesian system form. Cartesian system. हम लोग Cartesian coordinate system के respect में इसको discuss किया. Okay. So in Cartesian coordinate system, delta cube r minus r naught, where r is basically x I cap plus y j cap and z k cap,
and zk cap x equals to r naught is equals to x0 I cap, y0 j cap, and z0 k cap, then the Dirac delta function is Cartesian coordinate system is expressed as like it delta x minus x naught, delta y minus y naught, and delta z minus z naught. This is the Cartesian coordinate system expressions. Okay. Now we discuss it is in if the point let us consider जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे चूज किया था r naught it's equals to x naught y naught z naught. Okay, x naught y naught z naught, it is equals to 0, 0, 0. Okay, if the point is if the point p r naught is equals to x naught y naught z naught is equals to 0, 0, 0, 0, 0, then the representations of the Dirac delta functions, then the representations of 3D Dirac delta functions, 3D Dirac delta functions, it is equals to delta q r vector minus r naught vector equals to 0. So it is equals to basically delta q delta r vector, and it is equals to delta x minus 0, delta y minus 0, delta z minus 0. So it is equals to delta x, delta y, and delta z. So in general, delta q r vector, it is equals to always delta x, delta y, z. This is the expression so in Cartesian coordinate system. Okay, that's fine. This is the equation 1. Okay, this is the equation 1. ठीक, नेक्स्ट हम लोग स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिराक डेल्टा फंक्शंस को हम लोग स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशंस, टेक ए हेडिंग स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंटेशंस. स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट system representations. Spherical polar coordinate system representations, that is r theta phi. Okay, r theta phi. Spherical polar coordinate system representations, that is the r theta phi. So we take the general forms. Okay, general forms. Delta cube r minus r naught, it is equals to basically यहाँ पे जो r vector है, the point is r theta phi, और r naught point is nothing but r naught theta naught phi naught, any arbitrary point. Okay, इसको हम लोग एक्सप्रेस करने वाले. So it is equals to basically 1 upon h1 h2 h3 delta r minus r naught, delta theta minus theta naught, delta phi minus phi naught. Okay, so now h1 is equals to 1 into r sine theta. Okay, so it is into delta r minus r naught, delta theta minus theta naught, delta phi minus phi naught. So it is equals to basically जो expressions मिला है 1 upon r square sine theta, delta r minus r naught, delta theta minus theta naught, delta phi minus phi naught. So now this is the expressions of Dirac delta functions in spherical polar coordinate system. Now we use very interesting fact or very interesting concept
of Dirac delta functions. This is equation number 2. Equation number 2. As we know, we know the basic formula delta of g of x. Okay, this is nothing but it's equals to delta x minus x naught, g prime of x इक्वल्स टू x माइनस x नॉट। इसके बारे में हम लोग बहुत ही पिछले वाला जो लेक्चर है, इस पिछले वाला लेक्चर में इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन किया, कुछ प्रॉब्लम वो किया। नाउ वी ट्राइंग टू फाइंड आउट द Dirac delta functions of cos theta minus cos theta 0। ठीक है, cos theta minus cos theta 0। So it is, this is the point, this is an any arbitrary point, and this is the functions, this is any arbitrary point value, value of this functions, value of cos theta in particular point theta naught, and cos theta is any functions. Okay, this is the point and this is the functions. This is the functions and this is the point. So it is equals to, it is nothing but delta theta minus theta naught, and the derivative of del theta cos theta minus cos theta naught. Cos theta naught is any constant term, so it is equals to basically delta theta minus delta theta naught, it's equals to sin theta and theta naught. Okay, that's fine. Okay, it's okay. This is the equation number 3. This is the equation number 3. So आप देखिए डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग एक एक्सप्रेशंस मिला हम लोगों को, बेसिकली डेल्टा cos theta minus cos theta naught, it is nothing but it is equals to delta theta minus theta naught sin theta. This is the equation number 3. Okay, this is the equation number 3. Now from equation 2, from equation 2 में जो बेसिकली रिजल्ट मिला था डेल्टा क्यूब r वेक्टर माइनस r नॉट वेक्टर, इट इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर। जो साइंस थीटा वाला टर्म था, दैट इज हम लोग रीअरेंज करने वाले r माइनस r नॉट डेल्टा थीटा माइनस थीटा नॉट साइन थीटा डेल्टा फाई अपॉन फाई नॉट। सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली जो रिजल्ट मिलेगा आपको r स्क्वायर डेल्टा r माइनस r नॉट डेल्टा cos theta minus cos theta naught equals to delta phi upon phi naught. So this is the Dirac delta functions representations in 3D dimensions. Okay, so overall 3-dimension representations of Dirac delta functions in spherical polar coordinate r vector minus r naught vector, it is equals to 1/r square delta r minus r naught delta cos theta minus cos theta naught delta phi upon phi naught. So this is the expressions of Dirac delta functions in spherical polar coordinate, equation number 4. Very important problems. It's very important. These questions asked in the Tifr examinations. This is the Tifr examinations questions. These questions asked in Tifr examinations also. That's fine. हम लोग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं. Don't worry. जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछा था, उस क्वेश्चंस को हम लोग चेक करने वाले हैं. Now हम लोग नेक्स्ट सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका वैल्यू देखने वाले हैं. ठीक है. So cylindrical polar coordinate representations.
cylindrical polar coordinate representations. ठीक है, cylindrical polar coordinate representations. तो cylindrical polar coordinate system बेसिकली इसका मतलब s phi z होता है. इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शंस को एक्सप्रेस करने वाले हैं. सो एज वी नो, डेल्टा क्यूब आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, it is equals to 1 upon h1, 1 upon h2, h3, delta s minus s naught, delta phi minus phi naught, delta z minus z naught. So h1, it's nothing but 1 into s into 1, delta s minus s naught, delta phi minus phi naught, delta z minus z naught. So it is equals to basically 1 upon s, delta s minus s naught, delta phi minus phi naught, delta z minus z naught. So this is the expressions of spherical polar coordinate system, Dirac delta functions in cylindrical polar coordinate system. This is the equation number 5. Okay, so these are the Dirac delta functions representations. Dirac delta functions representations in spherical polar coordinate system. Okay, now take some problems on three-dimensional Dirac delta functions problems. All of the questions are asked in David J. Griffith books. अगर आप लोगों के पास ये वाला किताब है, आप किताब को ओपन कर लीजिए और मैं अभी क्वेश्चन वगैरह लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से नोट करिए अच्छे से. So these are the very good questions asked in three-dimensional Dirac delta functions problems. So let us take problems of David J. Griffith. Okay. डेविड जी ग्रिफिथ किताब को लेने दीजिए थोड़ा सा. किताब से हम लोग प्रॉब्लम वगैरह करने वाले हैं. ठीक है, ये लगभग 4 प्रॉब्लम है. 4 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए क्वेश्चंस को लिखिए. फर्स्ट जो क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हम लोग कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशंस r square plus r dot a plus a square into delta cube r minus a into d tau, where a is a fixed vector. Okay, that is a fixed vector. A is a fixed vector, is any point, three-dimensional point, and mod a equals to a is its magnitude. Is its magnitude. Okay, इसका magnitude भी given है यहाँ पे. Magnitude.
and the integral h over all space, right? Integral basically given है over all space. इसके इंटीग्रेशंस बेसिकली आपको फाइंड करना होगा. सो बेसिकली आपको जो फाइंड करना है ना, आपको फाइंड करना होगा बेसिकली इंटीग्रेशंस ऑल स्पेस r square plus r dot a plus a square delta cube r minus a into theta. आपको इसका वैल्यू आपको बेसिकली फाइंड करना होगा, इसका इंटीग्रेशंस का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, चलिए नोट करिए एक्सरसाइज क्वेश्चन. क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए, हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, डोंट वरी. देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है, दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन. हम लोग चेक कर, दिस इज द वॉल्यूम इंटीग्रेशन. और लिमिट बेसिकली डिस्क्राइब जो कर रहे हैं, लिमिट जो डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल स्पेस, दैट मींस माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी. तो इस फील्ड के अंदर, इस ओवरऑल स्पेस के अंदर ये जो पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज मस्ट बी लोकेटेड विथ इन दिस ओवरऑल स्पेस. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितना बड़ा स्पेस है, जो ओवरऑल स्पेस है, उस स्पेस के अंदर कुछ भी एक पॉइंट में, एक पॉइंट बेसिकली ए पॉइंट को डिनोट करने वाले हैं. ठीक है, ए पॉइंट को इंटरप्रेट करने वाले हैं. सो दैट मीन्स ए पॉइंट इज विथ इन द ओवरऑल स्पेस. सो हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन का जो प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज को हम लोग पुट करने वाले हैं. दैट इज आर के प्लेस में हम लोग ए वेक्टर को पुट करने वाले हैं. ठीक है, दैट इज वेरी इजी प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम इज वेरी इजी. सो थोड़ा सा फुद्दू वाला प्रॉब्लम है, हम लोग फुद्दू प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. डोंट वरी, बट बेसिक डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है. इसीलिए हम लोगों का जो बेसिक है, बेसिक को फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद हम लोग और भी डीपली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. डोंट वरी, ग्रिफिथ में बहुत बड़ा, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखिए, सो अप्लाई यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ Dirac delta functions. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज इज बेसिकली ऑल स्पेस f of r vector, it is equals to delta cube r vector minus r naught vector d volume integrations, it is equals to basically f of r naught. This is the properties. So हम लोग यहाँ पे r के प्लेस में a पुट करने वाले हैं. So the integrations का वैल्यू बेसिकली आपको जो मिलने वाला है, a square plus a dot a plus a square. So this is nothing but a square plus a square plus a square equals to 3a square. Okay, this is the very basic problems. Now हम लोग सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट करिए. यहाँ पे भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन मॉड r माइनस बी का स्क्वायर डेल्टा क्यूब फाइबर, डेल्टा क्यूब फाइबर, ओके, इनटू डी टाउ where v is a cube of side 2. Volume is a cube of side 2. गिवन है साइड 2 का एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, सेंटर्ड ऑन द ओरिजिन बेसिकली सेंटर में है इस क्यूब का, सेंटर
at the origins. ठीक है, center at the origins. Okay, fine. And b is equals to, जो b वेक्टर यहाँ पे गिवन है, and it is equals to basically 4y cap plus 3z cap गिवन है आपको। इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन से इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का, इसको हम लोग चेक करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, स्केलिंग ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्केलिंग ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, स्केलिंग ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। Scaling of Dirac delta function. As you know, the delta k of x is nothing but 1 upon k delta x. In similar manner, delta cube k of x, it is nothing but 1 upon k cube delta x. Okay, fine. Delta x. This is the scaling of one dimension case, and this is the scaling of two dimensions case. So please remember. K of, not k of r, k of r, k of r होगा, ठीक है, k of r. So the scaling properties को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. So that is यहाँ पे जो given delta q 5 of r, so it is nothing but 1 upon 5 cube delta cube r. Okay, this scaling properties को हम लोग इस इंटीग्रेशंस में पुट करने वाले हैं. देखिए जो वॉल्यूम इंटीग्रेशंस r mod of r minus b का स्क्वायर डेल्टा क्यूब 5 of r d tau था. So it is integration, volume integration r minus b का mod स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू स्केलिंग प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे तो 5 क्यूब डेल्टा क्यूब r into d tau. So that is equals to 1 upon 125 is out of the integrations. Now volume r minus b mod square and delta q r into d tau. अब देखिए इसका जो इस डेल्टा फंक्शंस का जो पॉइंट है बेसिकली, दिस इज द r माइनस r नॉट वाला जो पॉइंट, दैट इज द ओरिजिन के अंदर, दैट मींस क्यूब के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है. तो यहाँ पे v इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 2, ठीक है, साइड 2. बट यहाँ पे जो पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट था, फिक्स्ड वेक्टर r नॉट वाला पॉइंट, दैट इज बेसिकली r नॉट इट्स हियर इक्वल्स टू 0,0,0, बट इट इज within the cube. That means we are use the properties of Dirac delta functions. So Dirac delta functions का property यहाँ पे यूज करिए 125, इट्स इक्वल्स टू r के प्लेस में बेसिकली 0 पुट करना होगा, राइट, r के प्लेस में 0 पुट करना होगा. सो दैट इज इक्वल्स टू मॉड 0 माइनस b का मॉड स्क्वायर, ठीक है. सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 125 इक्वल्स टू b स्क्वायर. अब b जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना होगा. तो यहाँ पे जो b वेक्टर बेसिकली गिवन था, इट इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3z कैप. सो मैग्नीट्यूड b स्क्वायर इट्स इक्वल्स टू बेसिकली आपको मिलने वाला है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, so it is equals to 25, ठीक है, it is equals to 25. So the substitute in the equations, so the integrations equal I equals to 1 upon 125 into 25
it is equals to 1/5. 1/5, so it is equals to 0.2. इसका जो आंसर बेसिकली आपको मिला 0.2 मिलने वाला है. So this is the second kind of problems. Next और भी हम लोग इस प्रॉब्लम्स को लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, this is third problems. Problems is here are given the volume integrations r to the power 4 plus r square r dot c plus c to the power 4. Okay, fine. C to the power 4 and delta cube r minus c into d tau volume integrations, where v is a sphere. Okay, this is a sphere. V is a sphere of radius 6. Okay, that's of radius 6. 6 रेडियस का एक स्फीयर यहाँ पे गिवन है. अबाउट द ओरिजिन, और भी अच्छा होंगे. ठीक है, अबाउट द ओरिजिन. ठीक है, और c इज नथिंग बट, और c जो वेक्टर है, c वेक्टर इज इक्वल्स टू बेसिकली गिवन है 5x कैप प्लस 3y कैप प्लस 2z कैप. दैट मीन्स c वेक्टर का एक पॉइंट आपको मिला 5, 3, 2. ओके, ठीक है, और इससे आपको इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लीजिए. तो ये जो पॉइंट बेसिकली स्फीयर के अंदर है और आउटसाइड द स्फीयर है, ये भी हम लोग फाइंड कर लेंगे. डोंट वरी. एंड c इज इट्स मैग्नीट्यूड, एंड c इज इट्स मैग्नीट्यूड, ये भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, कोई बात नहीं. इट्स magnitude. So now find out the properties. Now find out the problems. So देखिए, first of all, फर्स्ट देखिए, ठीक है, अब फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर गिवन था, डायमेंशन स्फीयर गिवन है. दिस इज द ओरिजिन, दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और स्फीयर का रेडियस इज नथिंग बट 6, और जो कांस्टेंट वेक्टर यहाँ पे गिवन था दैट इज नथिंग बट 5x कैप प्लस 3y कैप प्लस 2z कैप, एंड द मैग्नीट्यूड इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर. ओके, इंटू 2 स्क्वायर. तो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली आपको मिलेगा 25 इंटू 9 इंटू 4, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली 32 38. ओके, 38 है. सो इसका मतलब आप सी स्क्वायर फाइंड करिए, सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेसिकली 38. बट स्फीयर का जो रेडियस था दैट इज 6, दैट मींस 36. इट मींस ये जो पॉइंट बेसिकली लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर, this is the point basically 5, 3, 2. It is not enclosed within the sphere. It is not enclosed within the sphere. So the vector, so the constant vector or point, so the vector मान लीजिए, so the vector c or point 5, 3, 2 is outside the volume. That means using these properties the overall integration value is 0. ठीक है, तो जो इंटीग्रेशंस था यहाँ पे v
r to the power 4 r square r dot c plus c to the power 4 डेल्टा क्यूब r माइनस c डी टाउ, इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ये जो c पॉइंट है, दैट c इस यहाँ पे जो c का जो पॉइंट था 5,3,2, ठीक है, इट्स आउटसाइड था, इट्स आउटसाइड द स्फीयर और वॉल्यूम आउटसाइड द वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर होना चाहिए, इंक्लोज होना चाहिए, बट यहाँ पे इंक्लोज नहीं है, इसीलिए इसका वैल्यू बेसिकली 0 आ रहा है, दैट्स ओके। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। आर वेक्टर डॉट डी माइनस आर डेल्टा क्यूब ई माइनस आर डेल्टा टाउ, where d is equals to any point, it's given by 1, 2, 1, 3, और e जो वेक्टर है इस कांस्टेंट वेक्टर पॉइंट, इसका पॉइंट है बेसिकली 3, 2, 1, and v is a sphere of radius 1.5, ठीक है, centered at 2, 2, 2, ओके। तो चलिए इसका क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करिए, इसका जो आंसर होगा बेसिकली -4 होगा, आप लोग खुद से ट्राई सॉल्व कीजिए और मुझे इसका जो सॉल्व है सेंड करिए, हम लोग चेक करेंगे इसको क्वेश्चन को, ओके। ठीक है, दिस इज द problems, this is the problems of some problems of three-dimensional Dirac delta function, और थ्री-डायमेंशनल Dirac delta function से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशंस किया यहाँ पे, और हर एक प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, और हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया इस लेक्चर में। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं, that is also very important in electrostatics. Now we trying to find out the divergence. What is the value now take now divergence of r cap upon r square, that means हम लोग चेक करने वाले हैं divergence upon r cap upon r square के value. It is, remember, always it is equals to divergence of r cap upon r square, it is equals to always 4 pi delta cube r vector. Okay, please remember, very important,
इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोग इसके जब प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे ना, इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग चेक करने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डाइवर्जेंस ऑफ r cap upon r square is equals to 4 pi delta q bar. Now we check another concept. Now gradient of 1 upon r, it is nothing but minus r cap upon r square. So h divergence of r cap upon r square, it is equals to divergence of minus gradient of 1 upon r. So it is equals to minus grad square 1 upon r. So we are to find out the another important identity. It's grad square 1 upon r, it is equals to minus 4 pi delta q bar. ठीक है? So please take a note. We are find out the two important identity. Divergence of r cap upon r square, it is equals to 4 pi delta q bar. Another identity is gradient of grad square 1 upon r, it is equals to minus 4 pi delta q bar. These two identities are very important. Okay, so using this identity, we'll find out another problem. Question number 5. Evaluate the integral j into v r square plus 2 divergence of r cap upon r square into theta. So as you know the definitions of Dirac delta functions, where V is the sphere, V is a sphere of radius r, centered at the origin. ओके, चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सो जो इंटीग्रेशंस था बेसिकली जे वॉल्यूम इंटीग्रेशंस, एक स्फीयर का वॉल्यूम है, दैट इज इक्वल्स टू r square plus 2 divergence of r cap upon r square into d tau. It is equals to basically 4 pi delta q bar. Integrations v r square plus 2 4 pi delta q r into dv और d tau, सेम वॉल्यूम इंटीग्रेशंस रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो 4 pi इज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन से बाहर आने वाला है। वॉल्यूम इंटीग्रेशंस r square plus 2 delta q r into d tau. r is any point within the sphere. ओके, यहाँ पे r is less than r. r जो पॉइंट है स्फीयर का रेडियस से कम होगा, और इफ r is greater than 0 then its value is 0. ओके, यहाँ पे टू केस आने वाला है। if r less than r then we get some value, if r greater than r then its value is 0. ठीक, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट है that is basically located inside the
sphere. So we use the properties of Dirac delta function. So 4 pi r के प्लेस में 0 पुट करिए प्लस 2 तो इक्वल्स टू 4 pi into 2, इसका रिजल्ट 8 pi आएगा. So the integrations j is 8 pi when r less than r and its happy value 0 when r greater than r. So please remember the point. Okay, so please remember the concept. But here r is equals to 0, right? r equals to 0, that means origin represent कर रहा है, तो इसका वैल्यू 8 pi आएगा. ओके, 8 pi आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Evaluate the integral. Evaluate the integral j is equals to v e to the power minus r divergence of r cap upon r square into theta, where v is a sphere of radius r centered at the origins. Okay, fine. Centered at the origins. Okay, centered at the origin. Find out the given integrations. ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं. J is equals to volume integrations e to the power minus r divergence of r cap upon r square into theta using the properties volume integrations e to the power minus r 4 pi delta cube r vector, it is equals to theta. So 4 pi is out of the integrations, so volume integrations e to the power minus r delta cube vector into theta. Now r is 0, the constant vector is 0, r equals to 0 at the origins. So this is the enclosed region in the sphere. So you can use the properties of Dirac delta functions. So it is equals to 4 pi e to the power minus 0, it is equals to 4 pi. This is the answer. ठीक है, सब लोग डेविड जे ग्रिफिथ का जितना सारा प्रॉब्लम्स था डिराक डेल्टा फंक्शंस के बेस करके, 3 डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस को बेस करके हम लोग हर सारे प्रॉब्लम्स हम लोग बेसिकली यहाँ पे सॉल्व किया. Okay, fine. These are the two important properties of Dirac delta functions. Also, we are find out the scaling properties. Also, find out the divergence of this r cap minus r cap upon r square is equals to 4 pi delta cube r, and grad square 1 upon r is equals to minus 4 pi delta cube r. Okay, so this is the very important concept discussed here. This is the 3-dimensional delta function properties, and also we are solve most of the problems of David J. Griffith books. Now, in the previous class, that means in the next class, we are discuss how Dirac delta functions is related with the charge density. ठीक है, हमरा जो Dirac delta functions है, इस Dirac delta functions को हम लोग चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करने वाले हैं. इसको हम लोग चेक करने वाले हैं डेल्टा ऑफ एक्स के साथ, चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैसे आपके पास एक चार्ज गिवन है, एक कांस्टेंट पॉइंट सोर्स गिवन है, पॉइंट चार्ज गिवन है, इस पॉइंट चार्ज से हम लोग रो ऑफ एक्स कैलकुलेट करने वाले हैं.
पॉइंट चार्ट से रो एक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करते थे, पहले रो एक्स आपके पास गिवन होता, आप क्यू फाइंड कर लेते थे। दिस इज द फाइंड करने के वाला टास्क था। बट यहाँ पे क्या होगा, आपके पास क्यू गिवन होगा, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट रो ऑफ एक्स विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस। हम लोग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का कंसेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को देखने वाले नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, साथ साथ कुछ वाई के लिम का कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट करिए, और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, खुद से ट्राई कीजिए। और हम लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको असाइनमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो हैप्पी लर्निंग।